Hi, friends, welcome back with an exciting vlog. Today, I have planned to take you on a short tour of Mall of the Emirates. दुबई में जितने भी malls हैं, like we explored in my last vlog, that was Dubai Mall, and now it's done for the Mall of the Emirates. तो सोचा कि चलें इसको डिस्कवर करते हैं. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के देखने के लिए. लाइक यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ लाइक stores, branded items, branded shops, okay, and a very big and a huge market that is called Carrefour, जिसके अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ हैं. एवरीथिंग यू कैन गेट अंडर वन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको ग्रॉसरी मिल जाती है. इसके अलावा टॉयज़ हैं, होम एक्सेसरीज़ हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, electronics and mobile and gadgets. Whatever you want, you can buy under one platform. अभी यहाँ से हम लोग मॉल की जो एंट्रेंस है उसमें, आई मीन पार्किंग जो है उसमें इंटर होंगे, विच इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड. यहाँ की शॉप्स और स्पेशली द वे दे हैव डेकोरेटेड, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर सर्विस भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. एज़ वेल एज़ जो नीटनेस है, क्लीननेस है, यू कैन सी द डिटेल्ड क्लीननेस. कहीं पर भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी. बहुत ही साफ़ सुथरा निज़ाम है इनका, विच इज़ रियली एडमायरेबल.
और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुबई ने वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी जितनी भी इनकी एसेट्स हैं, जो इन्होंने माल बनाए हैं या जो रोड्स हैं या जो गलियाँ, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन किया है। मॉल में आए तो सोचा कि चलें गाड़ी के लिए परफ्यूम ले लें, और कोशिश तो बहुत की, इतने सारे लगे लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। बाद में फिर वन ऑफ माय फ्रेंड एक्स्ट्रा लार्ज फेस माशाल्लाह, उसने फिर एक चूज़ कराया और वो हमने लिया यहाँ से, और फिर यहाँ से निकल पड़े नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।